सो आज डिस्कशन करबा पाइपलाइन प्रोसेस। हां को सर ये डॉक्यूमेंट अभी टे पठेबे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर कर रखी छै ना ऑलरेडी समस्त सहित शेयर करी तुम मन सहित शेयर कर रखी छी माने मेल शेयर करछंती ना शेयर हां एमती मे एटा हमरो ड्राइव रे गूगल ड्राइव रे देखिबो एटा थिबो फिर भी आउथरे शेयर कर देली तो मतलब सेंड कर देबे ओके थैंक यू सर कौन আছে 268 ओके सो आज हमें देखिबा पाइपलाइन प्रोसेस ओके इट्स ए स्पेशल प्रोक्योरमेंट राहुल जॉइन को लगी ओके राहुल को जाय प्रैक्टिस करलनी यस सर को जाय प्रैक्टिस हलानी प्रैक्टिस सर मु दिन करिनी टी काम रे व्यस्त रही जाईची फिर भी को जाय कंप्लीट सरलानी सेटा करली होती P2P प्रोसेस चलछि ना कोन म्यूट अछि कि तमरो ओके सो हमें अब देखिबा पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट राइट पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट इज द टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेस जो थरे की कोन हेता है कि ऑलरेडी तमरो जोटा मटेरियल आउछि रॉ मटेरियल होउछि कि या फिर व्हाट एनी टाइप ऑफ मटेरियल ओके जोटा की कनेक्टेड रहउछि थ्रू पाइपलाइन थ्रू योर वायर्स ओके थ्रू गैस पाइपलाइन ओके तो ए सब जिनसर ऑलरेडी तुम सहित कनेक्टेड रहउछि जेमति कि हमें रियल टाइम रे कोन हुए सो एलपी गैस यूज करंती कंपनी रे राइट इलेक्ट्रिसिटी यूज हुए एंड डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज हुए जोटा को जाय डीएम वाटर राइट सो ए सब जिनस कोन करा जाय कि ये माने आउटसोर्सिंग करंती बाहरु नियंती जेमिति कि तमरो निज घरे तमे कोन करछो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करछो ऑलरेडी वी आर कनेक्टेड अछि ओके तमे बस जेतकी मितान ता सहित तमरो एनर्जी मीटर भी कनेक्टेड अछि तमे जेति की यूज करछो सेति की पेमेंट करछो राइट बुझी परला तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस सो सिमिलर प्रोसेस भी तो गैस टा डिस्ट्रीब्यूट होची भुवनेश्वर थ्रू पाइप रे सेटा एग्जांपल नहीं करी हाँ सेटा भी सेम प्रोसेस जेमती तम गैस घरे यूज होउची गैस सिमिलरली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान करे भी यूज करा जाउची ओके से जगह रे से मानकर फ्लो मीटर लागिची यो सेतरे कि सेडा से माने चेक करछुंदी केते कंज्यूम कले ओके तो सेमती तमरो बोर होल वाटर भी जितो बळे यूज करछुंदी से जगह रे भी कंज्यूम होउची ओके सो जो गुडा एमती कंटीन्यूअस प्रोसेस रहउची कंटीन्यूअस कनेक्शन हे के रहउची एंड सेथरु तमे जेतकी यूज करछो सेतिकी अमाउंट रही पेमेंट करछो ओके दिस दोस टाइप ऑफ प्रोसेस को हमें कौन कहबा पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट सो प्री रिक्विजिट एंड देखो तुमको मो एउडा तुमको बुझाई देली डिटेल्स रे हैला माने कांसेप्ट कोन मु तुमको जणाई देली तमे जो पूरा डिस्क्रिप्टिव हमको दरकार सेंटेंस टू सेंटेंस दरकार से जगह रे सेडा को तुमको टी काम करिया पड़िबो किछ नाही सीधा चैट जीपीटी पळेबो कि या फिर एनी टाइप ऑफ एआई मॉडल पळेबो जोडे भी तुम पर अवेलेबल अछि सीधा एटी पुट करिवो व्हाट इज pipeline procurement in SAP MM बस तब एवढा सेवढा मेंशन आसीबो तमको स्टेटमेंट गुडा pipeline procurement is a special procurement process used when materials are supplied continuously through a pipeline like water gas electricity and no physical goods recipe is required okay so एगुडा को तमे नेकी तमर निजर भी नोट्स बनै परिबो
सर पाइपलाइन टा केबे भी माने कन्साइनमेंट सहित रिलेटेड अछि कि कहना हाँ जति रिलेटेड हम अच्छी। कंसर्न हाँ देखो प्रोसेस समथिंग डिफरेंट बट एसएपी रे जो एक्टिविटीज करिवो दैट इज मोर और लेस रिलेटेड टू दिस वन। जेमति कि हमें पीओ करूचे राइट, कन्साइनमेंट पीओ करिचो एंड स्टैंडर्ड पीओ करचो से माने कोन रिलेटेड बट बिजनेस प्रोसेस गोटे डिफरेंट। स्टैंडर्ड रे कोन करचो जेतोल मटेरियल रिसीव करचो से सब इनवॉइस रिसीव करचो बट कन्साइनमेंट प्रोसेस रे कोन से आनिकरी डंप कर देला कोठी कंपनी रे सप्लायर किंतु पेमेंट से समय तुम करूनो जेतबेले यूज करछो सेतबेले पेमेंट करछो बट आमे एसएपी रे जेतबेले मैप करछे आमे कोन करछे ओनली आइटम कैटेगरी सिलेक्ट करछे आज के ओके सो दैट आमे प्रोसेस पैसाटा कंसाइनमेंट पीओ हुआ जाउ से सिमिलरली पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट रे कोन होची सेटा आमे देखिबा फर्स्ट आमे देखिनवा प्री रिक्विजिट व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट पॉइंट नंबर 1 info record maintain in first of all मेटेरियल हमर अछि हमें कोन कंसाइनमेंट रे जे कोन से मेटेरियल को हमें नहीं जाउतले राइट रॉ मेटेरियल एंड ऑल एंड दिस टाइम हमको मेटेरियल क्रिएट करबा को पड़िबो विथ मेटेरियल टाइप पीआईपी क्रिएट और सिलेक्ट जदि ऑलरेडी क्रिएट करथबो देन सिलेक्ट सर मटेरियल पाइपलाइन आमे ओनली लुब्रिकेंट किंबा वाटर ऑयल एई सब जिनस पई आमे पाइपलाइन यूज कर परिया ना हाँ हाँ हम तो रॉ जोटा की प्रोसेस टा देखो एटा कोन अछि लेकिन सप्लायर कंटीन्यूअसली तुम आस्तिबो ओके एंड तमे जेतकी यूज करिवो सेतकी तमे पेमेंट करिवो ओके सेति पई तुमको यूज कर जेती यूज करछो मींस से जगह रे किछि गोटे डिवाइस लागिथो जोटा की मेजर करिवो हाउ मच यू यूज्ड। करेक्ट प्री रिक्विजिट रे कोन अछि क्रिएट और सिलेक्ट एनी मटेरियल ऑफ मटेरियल टाइप कोन पीआईपी रॉ मेटेरियल रो मेटेरियल टाइप कोन आरो एच आरओएच राइट हां पाइपलाइन मेटेरियल रो मेटेरियल टाइप होची पीआईपी देन पॉइंट नंबर 2 create info record with text code and info type pipeline info type कौन नवा पड़ियो pipeline third one create condition record for message output यार माने कोन क्रिएट कंडीशन फॉर मेसेज आउटपुट जेतो एठी कोन होची हमें तो इनवॉइस हमको मिलुनी ना सप्लायर टू बिकॉज़ एटा डिपेंड करे हम ऊपर कि हमें केते कंज्यूम करू छै राइट तो से जगह रे कोन करबा कि हमें सेटलमेंट करबा ओके जो सेटलमेंट करबा कि जेती कंज्यूम कर तार पेमेंट करबा तो पेमेंट करबा को जो सो इनवॉइस हमें जेतो बेले जनरेट करबा तो ताको सप्लायर को पठेबा कि एती की हमें दिस मच अमाउंट ऑफ material we have used so this is the total price okay तो से जोटा आउटपुट करिबा प्रिंट करिबा या फिर मेल रे पठेबा सेटा आउटपुट केमती होबो ता पई कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करिवार अछि ओके mm01 and this is me11 info record create condition record mrm1 okay so these are the prerequisites and note process flow केमती अछि यार कि फर्स्ट हमें क्रिएट करो मटेरियल नेक्स्ट इन्फो रिकॉर्ड स्टेप 3 रे कोन हो स्टेप 3 रे
Any guess? Direct issue. Okay. Issue or consume or use material. Okay. It is your consume. हमें consume करिवा. So ए जगह भाबुथिबो consume जदि हमें करूचे ए जगह PO कोन पई नाही PO कोन पई नाही goods receipt कोन पई नाही ओके नहीं हमें डायरेक्ट इन्फो रिकॉर्ड बनौचे एंड कंज्यूम करछे Yes. यस और नो हाँ yes. काहे कि नहीं बिकॉज़ देखो हमर स्टेटमेंट कोन कहूची इट्स ए कंटीन्यूअस थ्रू पाइपलाइन सो कंटिन्यू हम पाखर अछि हमें ऑर्डर किछि दउने अदर केसेस रे कोन थिला कि हमें सप्लायर को परचेज ऑर्डर प्रोवाइड करिवा एंड ताकटू से माने मटेरियल देले हमें रिसीव करिवा बट ये तो ऑलरेडी हम संगे माने हमर क्लोज टू आवर डोर ऑलरेडी से माने इंस्टॉल्ड अछि ओनली हमें ताको यूज करिवार ही बाकी अछि राइट एंड पीओ पई कोन से बैक एंड रे माने एग्रीमेंट हे जिवो जोटा कि ता पई हमें इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करिवा ओके तार केते प्राइस रहइबो को टैक्स कोड लागिबो हला तो सेटा हमें मेंटेन कर दले कोट इन्फो रिकॉर्ड रे ताको सहित निज निज सेमान को तांग कंपनी एंड सप्लायर भितर एग्रीमेंट हे गला एग्रीमेंट हला पर हमें इन्फो रिकॉर्ड बनेबा इन्फो रिकॉर्ड बनेला पर डायरेक्ट कंज्यूम करिवा ओके पाइपलाइन पड़ी गला या फिर इलेक्ट्रिक वेल पड़ी गला कंज्यूम करो एंड पेमेंट करो बुझी परलो कोन पई ए जगह रे सो एठी मो नोट रे मेंशन कर दोची नो पीओ एंड नो जीआर इन पाइपलाइन प्रोसेस ठीक अछि दिस इज अ नोट सो कंज्यूम करिवो कंज्यूम कला पर कोन होबो सेटलमेंट करिवो सेटलमेंट सेटलमेंट इज वन टाइप ऑफ कोन इनवॉइस इनवॉइसिंग ओके एमती करिवो सेटलमेंट एमआर केओ कंज्यूम करिवो एमआईजीओ रे गुड सिस्टम सेटलमेंट कला परे कोन करिवो सब आउटपुट करिवो ना मेसेज आउटपुट हाँ सप्लायर को प्रोवाइड करिवो सो मेसेज आउटपुट एमआर एम1 ओके सो दीज आर द 5 स्टेप्स हमको एटा फॉलो करिवार अछि सो आमे जतबे कंज्यूम करछे 201 मोमेंट रे कॉस्ट सेंटर रे कंज्यूम करछे राइट सो मु जोटा एबे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यूज करिवि तो सेतिरे कॉस्ट सेंटर नाही सो लेट्स क्रिएट वन कॉस्ट सेंटर क्विकली कौन अछि कॉस्ट सेंटर रो टी कोड AS01 controlling area RBS1 cost center RBP1 ठीक अछि production valid from today's date 22nd enter person responsible जार भी ना दे दे कुछ इशू नहीं और सेंटर कैटेगरी और टेक डिजाइन प्रोडक्शन hierarchy area same RBS1 currency INR okay done and save so this cost center is created so एबे हमें कोन करिवा फर्स्ट स्टेप हमर कोन थिला प्रोसेस फ्लो रे नाउ कम टू टेस्ट केस बुझा Okay. पडुची ना स्पीड अछि ना ठीक अछि ठीक है सर टेस्ट केस स्टेप 1
material ମାନେ କଣ କରିବା ଆମେ create material କରିବା, right? So let's move to create mm01 slash n mm01. So metal type कौन कहती कौन नबा हमें PIP. Okay, so put here PIP. This is a pipeline material. Select view. जेमते हमें view select करते similarly very few numbers left, no issue. बट ए जगह कौन करछे हमें स्टोरेज देखो एटी सिलेक्ट करबा नहीं. स्टोरेज इज नॉट सिलेक्टेड बिकॉज एटा पाइपलाइन हमें कंटीन्यूअसली आणुचे एंड यूज करूचे हमें एटा स्टोर करी रखू नाही, राइट? सो स्टोरेज लोकेशन हमर एटी दरकार नहीं, ओनली बेसिक डाटा परचेजिंग एंड अकाउंटिंग. क्लिक ऑन ओके. ऑर्गेनाइजेशन प्लान दे दिले. सो सपोज चेक इट एज पेट्रोल या डीजल, हाई स्पीड डीजल. हाई स्पीड डीजल मेजर करबा लीटर रे. मेटेरियल ग्रुप सपोज टेक इन मेटेरियल ग्रुप. परचेजिंग ग्रुप ए बेस यूनिट सब लीटर रे रहइबो ना पाइपलाइन पे. डीजल टा कोन लिक्विड मेटेरियल या सॉलिड मेटेरियल? ना ना लिक्विड तो ना मु कहूँ सब बेले एटा बोते लीटर रे रहइबो. हाँ लीटर ही रहिबो. जनरली लीटर ही रखा जाए या फिर वॉल्यूम नहीं परिबे जदी जो जगह वॉल्यूम यूज करथे मीटर क्यूब रे से माने करूथिबे ये समथिंग दिस मीटर क्यूब कहीं कि ना 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. तो सेमती भी से माने मैप करि परिबे, राइट? ओके. So GR processing time completed. Now valuation class. Valuation class nava pipeline. सर एसएपी रो स्क्रीन शेयर नहीं. सर म्यूट करछन.
ओके सो आमे पढ़ुले पाइपलाइन राइट हाँ so valuation class is coming like this so valuation class कोउटो आसे material type रो account category reference right so OMS to material type data logged okay position PIP तो चेक कर नबा कि अलग किसी अच्छी की PIP go to details account category କିଛି changes କରୁଛନ୍ତି for raw materials for spare parts packaging services finished account category reference for pipeline material okay एटा होची माने डिफॉल्ट ओके सो एटा हमें नबा माने जेहेतु डेमो सर्वर समस्त केही ना केही एटा चेंजेस करिवारे व्यस्त सो एटा को से कॉपी करके ही बनैथिबो नो इश्यू नो डाउट सो हमें आउथरे क्रिएट करिवा mm01 pipeline material select views organization level plant okay high speed diesel lifter material group purchasing organization GR processing time and here valuation class this is your valuation class and moving average price was per liter 90 rupees enter and save so this material is created as a pipeline material is created next step 2 info record. create info record and tax code so हमें already tax code जतो बेला हमें नबा ना जो जगह tax code आसीबो ना सब बेला पई फर्स्ट जीवो ओबीबीजी चेक करिवो सेठी हमरो कंट्री को को टैक्स प्रोसीजर आसे नहीं सेटा चेक करिवार अछि बिकॉज़ तमे जो टैक्स प्रोसीजर यूज करिवो सेटा कोन हेतिबा दरकार जो टैक्स प्रोसीजर अगेंस्ट तमे बनैछ सेही टैक्स प्रोसीजर आसा नहीं हेतिबा दरकार कंपनी जो कंट्री सहित ओके गो टू ओबीबीजी मु जोटा बनैछि यूज करछि से टैक्स जीबी टैक्स प्रोसीजर सहित यू अगेंस्ट क्रिएट हेछि सो देखो टैक्स जीबी टा ही राइट नाउ का सहित लिंक अछि कंट्री सहित अछि ओके देन इट इज ओके तो एटा हमें क्रॉस चेक करी के ही करबा अदरवाइज हमको इश्यू आसीबो हां ME11 create info record so vendor हमें नहीं जीवा this is our vendor number material कोड हमें क्रिएट कले 6030088 so it आसेल 30088 purchasing organization नहीं जीवा plant नहीं जीवा and info category as pipeline consignment रे हमें कोन करथले info category as a consignment नउथले pipeline पे हमें pipeline यूज करबा वेंडर तो एटी ताने दरकार होची ताने एठी आ गोट तो पॉइंट यूज होवा कथा वेंडर भी क्रिएट करिया दरकार
भेंडर क्रिएट करबा दरकार भेंडर हमें तो ऑलरेडी क्रिएट करछे ना हम भेंडर मास्टर मटेरियल मास्टर क्रिएट करछे हां जेहेतु एटी हमें स्पेशल हमको पाइपलाइन मटेरियल ही नबार अछि फॉर पाइपलाइन प्रोसेस सेहि पे हमें मटेरियल क्रिएट करछे अदरवाइज हमर ए भेंडर सपोज ए भेंडर हमर भी प्रोवाइड करियो जदि तमेर सेमति किछ अलगा भेंडर थिबो सपोज रियल टाइम रे अलगा भेंडर करते सब बहुत सारा भेंडर कोड हमें क्रिएट करछे थाउजेंड्स ऑफ भेंडर कोड थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर हमको सप्लाई करछन मटेरियल से मनकर भेंडर कोड क्रिएट करबो नो इशू हाँ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଥିଲି କାରଣ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡର ନୁହେଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଣ୍ଡର एडा डिफरेंट डिफरेंट बट हमें एडा प्रैक्टिस करिया पे हमें नहीं जेबे किछि इशू नहीं बट प्रोसेस इज सेम ओके ठीक अछि सो दीज आर द पैरामीटर्स वी हैव टू चूज ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ पाइपलाइन प्रोसेस एटा हमें इंसर्ट नहीं जेबा नेक्स्ट एंटर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा अच्छा जदि इन्फो रेकॉर्ड पे टेक्स्ट में आसु से सेठी पुट कर दियो इन्फो एटा आसीबा कथा नुह बट या के भी सेटा मैंडेटरी कर देथिबो देखो एठी कोन आसिला प्लांट हमें बे पाइपलाइन प्रोसेस करूचे सेति पे देखो पाइपलाइन हाइलाइटेड एग्री एटा आसिला कंसाइनमेंट करथले एठी कंसाइनमेंट आस्ता ए सब कॉन्ट्रैक्टिंग रे सब कॉन्ट्रैक्टिंग आसीबो राइट को टाइप ऑफ प्रोक्योरमेंट इन्फो हमें करूचे सो परचेज ग्रुप एठी हमें कोन करबा नेट प्राइस पुट करबा 90 रुपीस and tax code this is your tax code हमको एटा नबार अछि इनपुट टैक्स 5% सो एटी हमें इन्फो रेकॉर्ड तीनटा जिंस अछि दैट इज योर इन्फो टाइप पाइपलाइन नेट प्राइस पुट करबा एंड टैक्स कोड ओके टेक a screenshot नेक्स्ट सेव करा ओके जदि एमती का आसीबो ना कंडीशन टाइप सिलेक्ट करिया पई ऑलवेज सिलेक्ट pb00 so now purchase info record it is created purchase info record this one is created right then step number 3 ओके नहीं स्टेप 3 में कौन करिवा डायरेक्ट इशू करिवा कंज्यूम करिवा मटेरियल ए जगह रे नो पीओ नो जीआर टू टी कोड MIGO /MIGO कौन करबा कंज्यूम करबा ना डायरेक्ट गो टू गुड्स इश्यू जते बेले करबा से जगह हमको 201 मोमेंट रे गुड्स इश्यू करबा एंड केस ट्रांसफर कहा पई कंसाइनमेंट पई बट हमें एबे कोन करछे पाइपलाइन करछे राइट सो एटी हमको स्पेशल स्टॉक इंडिकेटर चेंज करबा पड़िबो टू पाइपलाइन मटेरियल ओके सो एटा नेला पर एंटर करो so that layout किछा चेंज होबार थी तो हे जिवो now put your material co material so this is our material quantity suppose 100 liter हम यूज करले for this week where देखो 201 p p कौन कोची goods issue GI that means goods issue for pipeline for cost center so pipeline material अछि हमरो ताको हमें इशू करूचे कहा पई कहा अगेंस्ट रे कॉस्ट सेंटर अगेंस्ट रे बुझ परला रेडी पुट करो प्लांट एंड देन गो टू पार्टनर को सप्लायर ए सप्लायर को हमें नउचे तो सप्लायर एठी भी आउथरे सप्लायर को भी पुट करिया पड़ियो एंटर तो तनाटा आसीगला देन अकाउंट असाइनमेंट रे हमको दबा पड़ियो कॉस्ट सेंटर बिकॉज़ हमें कॉस्ट सेंटर अगेंस्ट रे ही एटा को इशू करूचे
सो हमर कॉस्ट सेंटर कोन अछि ड्रॉप डाउन रू भी चेक करि परिबो कंट्रोलिंग एरिया पुट करो एंड ओके नाउ एबे जोटा में क्रिएट करथिले आरबीपी पीपी द कॉस्ट सेंटर एंटर now everything is okay item okay now check कौन आसी error account determination for entry int gbb bbr 9110 not possible okay so एटा हमें केमती करिबा एमती टाइप रो जदी तम पाखु आसुची देन तुमको जीवा पड़िबो गोटे टी कोड दैट इज नोन एज योर obyc /n obyc हला एटा भी तमरो भी आसीबो मन रखता obyc रे देखो बहुत सारा ट्रांजैक्शन अछि बट ये को ट्रांजैक्शन कहूची कि ट्रांजैक्शन ऑफ जीबीबी आईएनटी टा कोन हमर चार्ट ऑफ अकाउंट एटा इसी से हम करछु सेति भाई आईएनटी आउ जदी तमे हाना रे करिवो देन एटी आसीबो कोन आसीबो ycoa ओके हाना ईसीसी रे प्रोसेस सेम किछि डिफरेंट नै सो सेति भाई मु ईसीसी रे बनै देली एटी तमरा आसीबो ycoa एंड ट्रांजैक्शन कोन आसी जीबीबी सो चलो जीबीबी देखिबा ट्रांजैक्शन कोडी अछि जीबीबी हे देखो जीबीबी दैट मींस ऑफसेटिंग एंट्री फॉर इन्वेंटरी पोस्टिंग सो जीबीबी ऊपर डबल क्लिक करो चार्ट ऑफ अकाउंट कोन मगुछि कोन दबा हमर एठी चार्ट ऑफ अकाउंट आईएनटी आईएनटी पुट करो एंटर सो एठी के आसिला परे एठी कोन अछि देखो वैल्यूएशन मॉडिफायर जनरल मॉडिफायर एंड वैल्यूएशन क्लास ठीक सो एठी VBR होची वैल्यूएशन मॉडिफायर जनरल मॉडिफायर ओके VBR जनरल मॉडिफायर VBR से कहया कथा ए VBR एठी भी अछि VBR अछि VBR बहुत गुडा VBR अछि ओके एंड VBR सहित कॉम्बिनेशन एठी कोन अछि वैल्यूएशन क्लास 3000 3135 7920 डिफरेंट वैल्यूएशन क्लास अछि का सहित जनरल मॉडिफायर सहित बट से एठी कहबा कथा कि VBR सहित 9110 नॉट पॉसिबल VBR सहित 9110 नाही ओके सो दैट हमको गोटे क्रिएट करबा को पड़िबो ओके सेही कॉम्बिनेशन ता 9110 कॉम्बिनेशन करिया पड़िबो VBR सहित एंड सेथि को हमें कोन असाइन करबा कि हमर डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट को अकाउंट रो को अकाउंट रो पैसा ऐड होबो या माइनस होबो ओके बुझी परलो एरर सो जदी हमें एटा आ गोटे कॉम्बिनेशन पकेइबा देन एठी हमें कोन करबा न्यू एंट्री करबा अदरवाइज हमें एटा सिलेक्ट करबा जे कोन सी VBR गोटे सिलेक्ट कर दबा एंड कॉपी एज कर देले सेम तार तळ लाइन को एटा आसी जिवो जोटा रे कि हमको ओनली वैल्यूएशन क्लास ता चेंज करबो अछि वैल्यूएशन क्लास कोन 9110 9110 ओके VBR 9110 सहित हमें डेबिट एंड क्रेडिट कर देले नाउ एंटर एंड सेव ओके सो इट इज डन डाटा सेव्ड अगेन हमें एटा को ओके करो एंड आउ थरे एटा चेक करो देखो सेटा हटी गला एटे आउ गोटे जिंस आसी आउ गोटे एरर आसी पहुंचला क्रिएट अकाउंट दिस वन दिस इज द जीएल अकाउंट काइना ए जीएल अकाउंट हमें असाइन करथिले ना जीबीबी रे 4 ऑल जीरोस ओके VBR 9110 4 ऑल जीरोस ओके से कहबा कथा जो जीएल अकाउंट तुम एठी असाइन करलो फॉर दिस डेट एज कॉस्ट एलिमेंट इन कंट्रोलिंग ओके सो एटा हमें क्रिएट करबा तार एक्चुअली डेट हमको मेंशन करिवार अछि ओके बिकॉज़ एटा जी प्रीवियस डेट थिबो अलगा सो एटा होचे जीएल अकाउंट रिलेटेड इश्यू सो ता पय हमर टी कोड कोन अछि fs00 /o fs00 एंटर करो कला पर एठी हम जीएल अकाउंट पुट करिवा ओके से जीएल अकाउंट rbs1 रे एंड गो टू चेंज को गला परे and you can say this is control data bank account created on 26 this one
ओके ठीक अच्छे जोटा तले डेट आसीबो शायद एठी थिबो एडिट कॉस्ट एलिमेंट हाँ एठी अच्छी देखो वैलिड फ्रॉम 22/4/2026 रो समथिंग आज होची 22nd राइट ओके कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी प्राइमरी कॉस्ट रेवेन्यू टेक दिस प्राइमरी एज एगुडा काम हो सब जाक एफआई रिलेटेड ओके एंड सेव और कौन अच्छी एठी एगुडा किसी दरकार नहीं ओनली हमर थिला कोन एडिट कॉस्ट एलिमेंट रे हमको डेट मेंशन करिवार थिला इंडिकेटर डिफॉल्ट असाइनमेंट हिस्ट्री वैलिड फ्रॉम now go to information जोटा हम सेव करने छे देन आउ थरे जाई हम एठी चेक करबा ओके करो अगेन चेक देखो से एरर हटि गला नाउ आइटम इज डॉक्यूमेंट इज ओके राइट नाउ पोस्ट कला बेला हमर कोन आसी अकाउंट डिटरमिनेशन ऑफ एंट्री सेम दिस इज द ट्रांजैक्शन की इट इज द चार्ट ऑफ अकाउंट कोन आसी EIN रे 9110 नॉट पॉसिबल हां कोन किछ कहउतला बोल सर या प्रीवियस एरर टा जो पेज रे सॉल्व करले सेटा टिके देखि था FS00 रे कले ना तो आम जीएल अकाउंट FS00 सी कहवा कथा कि हमर डेट जोटा प्रीवियस डेट किछि थिला या फिर डेट नथिला से जगह रे सो जीएल अकाउंट पुट कला परे गो टू एडिट चेंज को जीवो चेंज को गला परे गो टू एडिट कॉस्ट एलिमेंट ओके एठी तो मोर डेट टा दबो डेट दला परे देन सेव करिवो ओके सेटा ऑटोमेटिक डेट टा नेई भी जीवो राइट एंड एठी तमर हां बस एतकी ही करिवार अछि अलग किछ करिवार एंड हमर सेम प्रॉब्लम पुणी आउथरे असला जोटा ओबीवाईसी रो EIN दिस टाइम ट्रांजैक्शन कोन अछि EIN सो गो टू EIN go back where is EIN purchase account EIN डबल क्लिक कर EIN सो EIN रे वैल्यूएशन क्लास को हमको असाइन करिवार अछि जीएल अकाउंट वैल्यूएशन क्लास कोन 9110 सो 9110 एठी अछि कि नहीं सो जे कोन गोटे क्लिक करो गो टू कॉपी एज 9110 110 हो गला नाउ एंटर एंड सेव again okay करो now again check document okay and post पुणी कोन एरर आछि ना अकाउंट डिटरमिनेशन एंट्री EKG 910 not possible केजी पुनी ऐड करिए so where is EKG purchasing offsetting account entry I don't know कोन एमती मैपिंग उडा आसीबा कथा नो बट जदी EKG एरर आछि हमको पास तो ठीक अछि 9110 again copy as 9110 एगुडा तम सर्वर रे आसीबनी सर्वर किछि इशू अछि सेति पे एगुडा सब आछि जीएल अकाउंट ए जो सब चेंजेस करछन एफआई टीम्स रो सेति पे एमती आछि changes has been saved now again check and post now document is posted right बुझ परला सो हमें जोटा मेटेरियल हमें एटी इशू कर देले इशू करला परे एटा हमको डिस्प्ले को जाओ 00543 is posted सो एटी हमर कोन আছে अकाउंटिंग एंट्री जे आसीबो बिकॉज़ हमें कंज्यूम करू छे तो सेतकी ही हमको कोन पेमेंट करिवार अछि यस posted so go to display this is your material document number enter go to where take the screenshot okay and document info go to document info FI documents
जदि एफआई डॉक्यूमेंट्स देखिबो हमर अकाउंटिंग एंट्रीज क्रिएट हेछि गो टू चेंज लेआउट सो ए जो दुईटा आसुना नंबर 3 नंबर 4 ओके एटा चेक करबे किसी दरकार नै एटा किसी एरर अछि सेति पय आसु माने अलग से माने किसी एफआई टीम्स करिसंती बट हमको ए दुईटा ही आसीबो ओके ए दुईटा ही आसीबो ट्रांजैक्शन कीज गोटे होची जीबीबी जोड़ा हमें कंज्यूम करूचे एंड तार कोन आस्तिला जनरल मॉडिफायर वीबीआर हां कि नहीं हमें वीबीआर पई सेट कले ना Yeah. सो एठी ट्रांजैक्शन जीबीबी एंड जनरल मॉडिफायर वीबीआर दिस इज आवर ट्रांजैक्शन कीज जीबीबी वीबीआर एंड यार कौन आसीबो अकाउंट पेएबल पीआईपी केओएन पीआईपी आरबी जनरल मॉडिफायर इज पीआईपी ओके बुझ परलो एटा आसीबो एटा कोन को जाय अकाउंटिंग एंट्रीज सेव क्लोज insert is the pictures screenshots so कौन accounting entries हैला एटा तो होची हम एटी मेंशन करबा accounting entries during Goods issue. GI for pipeline material ओके एटी ते हमें देखियो जे एथरे कोन थे फर्स्ट होची तमर जीएल अकाउंट ओ जीएल अकाउंट तमर हिट होची जीएल अकाउंट नेक्स्ट होची कोन अमाउंट केते अमाउंट तमर एटू डिडक्ट होची नेक्स्ट योर ट्रांजैक्शन की एंड जनरल मॉडिफायर या फिर अकाउंट मॉडिफायर भी जोटा कौन मॉडिफायर मॉडिफिकेशन एंड ये जो जीएल अकाउंट जोटा अछि से अकाउंट रो डिस्क्रिप्शन कोन ओके सो ए सब जिंस हमें देखिबा फर्स्ट दुईटा अकाउंट अछि ना फर्स्ट अकाउंट जोटा अछि दैट इज योर पेएबल अकाउंट ऑलरेडी एटी मेंशन अछि देखो पेएबल अकाउंट तार जीएल 169900 अमाउंट केते अछि 9000 ट्रांजैक्शन इवेंट की केओएन जनरल मॉडिफायर पीआईपी नेक्स्ट एटा होची कंज्यूम जोटी कंज्यूम होबो ना कंजप्शन अकाउंट जोटी कंज्यूम होबो तो से जगह रे तमरो जीबीबी एंड वीबीआर आसीबो ओके कंजप्शन अकाउंट 4 ऑल जीरोस अमाउंट सेम अमाउंट एटी कोन अछि क्रेडिट हेजी कंज्यूम होची माने कोन कंज्यूम जो अकाउंट अछि सेतिरे ऐड होची सो दैट विल बी credited
and now this one 9000 debited. Okay, ସବୁ ବେଳ ପାଇଁ ଆମର ସେଟା ନଲିଫାଇ ହବା ଦରକାର ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍. Okay, and this one is GBB and VBR. Got it? ବୁଝି ପାରିଲ? କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ରେ? ଆଚ୍ଛା ସୋ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କି ଆଉ ଜେନେରାଲ ମଡିଫାୟର ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ କହିଦେବେ କଣଟା? এটা ट्रांजैक्शन इवेंट की ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ବି ଆମେ ଟ୍ରାንଜାକ୍ସନ କରୁଛି that goods movement ହଉଛି. ଓକେ, ସो ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ସେ ସମୟରେ କଣ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ କିଛି ଆସିଥାଏ. ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ତମେ ମାର୍କେଟ କୁ ଯାଉଛ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ. ଓକେ, ସୋ ତମେ ଆପେଲ କିଣିଲ, ଆପେଲ ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛ ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ତମେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛ କାହାକୁ, ଯେ ମେଟେରିଆଲ ସପ୍ଲାୟର को ମେଟେରିଆଲ କରୁଛ, ଯେ ଭେଣ୍ଡର ଅଛି ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲ ଆଣ୍ଡ ମେଟେରିଆଲ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ କଣ କରୁଛ, ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ର ପ୍ରାଇସ୍ ର ମେଟେରିଆଲ ଟା ତମ ପାଖକୁ ଆଣୁଛ ବଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛ ନା. ତ ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛେ ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ପାଇପଲାଇନ ମେଟେରିଆଲ ଫର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ କରୁଛେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାንଜାକ୍ସନ କରୁଛେ ନା, ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ର ଗୋଟେ କି ସେଠି ମେନସନ ହୁଏ, ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଇଭେଣ୍ଟ କି ବି କୁହନ୍ତି. ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଏଟାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ ରେ. ସେ ଟପିକ ବି ଆମର ଅଛି, ଆମେ ସେଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଅଟୋମେଟିକ ଏଠି ଜିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଏ ଜାଗାରେ ଅଟୋମେଟିକ ଜିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଆସି ଯାଉଛି. ଓକେ, କୋଉ ଜିଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିବ ଏ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ହିଁ କାହିଁକି ଆସିଲା ଅଲଗା କାହିଁକି ଆସିଲାନି. ଓକେ, ସୋ এই ସବୁ क्वेश्चन ଅଛି ନା, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଟୋମେଟିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ ଟାଇମରେ. ସୋ ସେ ସମୟରେ ତମକୁ ଆସିବ ଏଠି କି ट्रांजैक्शन इवेंट की. देखो जो ट्रांजैक्शन इवेंट की जो गुड़ा अछि ओबीबीजी रे हमें देखुतले, दीज आर द स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन इवेंट कीज डिफाइंड बाय SAP. ओके, दीज आर द ट्रांजैक्शन इवेंट की. जेतोळे हमें गुड्स रिसीव करछे जेतोळे कोन BSX हिट होउछि ना, दैट मीन इन्वेंटरी पोस्टिंग हमर इन्वेंटरी अकाउंट अछि BSX. ओके, हाँ. सो ए सब जिंस भी हमें नेक्स्ट फर्दर क्लासेस रे देखिबा. ओके, सो आमे एबे प्रोसेस रे को जाय पहुंचले कि आमे ऑलरेडी गुड्स इश्यू करि सारलेनी. ओके, जेति कि आमे इश्यू करछे सेति कि आमे कोन करिवा, सेटलमेंट करिवा ना नहीं. सो नाउ टाइम फॉर सेटलमेंट. तो सेटलमेंट आमे केमति करिवा, दिस इज स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4. तो सेति कि अमाउंट पेमेंट करिवार अछि. सेटलमेंट एतरे आमे कोथरे करिया सेटलमेंट MRKO. Okay, now put MRKO /O MRKO. सो ए कंपनी कोड रे सप्लायर हमर की अछि, दिस इज सप्लायर, एटा हम सप्लाई करूची को प्लांट पई RBS1 RBP1 प्लांट पई. ओके, एंड एटी देखो दुईटा जिंस अछि कंसाइनमेंट एंड पाइपलाइन. एबे हम कोन करछे पाइपलाइन, सो कंसाइनमेंट को हटेबा, ओनली पाइपलाइन सिलेक्ट करिवा. फर्स्ट हमें डिस्प्ले करिवा देन सेटल करिवा. फर्स्ट डिस्प्ले करो एग्जीक्यूट. सो देखो 100 लीटर हम इश्यू करथिले 9000 रुपीस. इनफॉरमेशन कोन अछि नॉट सेटल्ड. सो हमको एटा सेटल करिवार अछि. देन गो बैक, क्लिक ऑन सेटल एंड एग्जीक्यूट. एटी डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हे गला. दैट मींस हमें सेटा को जोटा कि इनवॉइसिंग हमें एटी कले. ओके, सो गो टू डॉक्यूमेंट नंबर. So take the screenshot first. So now एठू हमें डायरेक्ट एठू जाई परिबा डॉक्यूमेंट नंबर. सो डॉक्यूमेंट नंबर रे देखो कोन अछि 9000 हमर कोन थिला अकाउंट थिला ना, पेमेंट करिवार हाँ. थिला हमको सप्लायर को 9000 हमर होची, हमें एति के कंज्यूम करछे 9000 रो. एंड ता ऊपर टैक्स केते अछि 5% नै थिला ना बे.
9000 ର 5% केते 450 रुपीस सो टोटल 9450 हमें काहे को दबा सप्लायर को पेमेंट करियो ना Yes. राइट तो सप्लायर अकाउंट इज दिस इज आवर सप्लायर एंड तमे एठी जदी जीव लेआउट चेंज करिवो चूज योर लेआउट जोथरे हमर ट्रांजैक्शन की कोन आछी देखिवार अछि ओके सो दीज आर द ट्रांजैक्शन कीज कोन आसीबो पेबल अकाउंट हमर सेठी पेबल अकाउंट कोन थिला KON PIP थिला मन अछि KON PIP now this time transaction event key is payable account is KBS okay consignment and pipeline रे एटा ही आसीबो जोटा ସେଇଟା की change फर्दर जाई चेंज हे जिवो ओके KBS and generally हमरो vendor account तो supplier account KBS थाए तो सेटा ही KBS रहइबो ओके एटा KBS कोन पई आसुची काहे कि ना एटा कोन देखो KBS रे एठी केबे मेंशन नाही KBS भी गोटे ट्रांजैक्शन की ना नहीं ट्रांजैक्शन इवेंट की सो OBBG रे चलो देखो OBBG रे KBS देखो वेयर इज KBS बट KBS रे अकाउंट डिटरमिनेशन ऑप्शन इज नॉट सिलेक्टेड ए माने कोन ऑटोमेटिक यार अकाउंट डिटरमिनेशन जो GL अकाउंट अछि सेउडा छै बट एठी कोन से GL अकाउंट हमें डायरेक्ट एठी असाइन करू ना हो अकाउंट असाइन्ड परचेज ऑर्डर सो एटा अकाउंट कोटू नबो परचेज ऑर्डर रो नै जिवो बट कंसाइनमेंट रे परचेज ऑर्डर नबो एंड एठू कोठी नबो KBS 169900 जोटा कि हमरो थिला कोथरे 169900 पेबल अकाउंट सो पेबल अकाउंट रो जोटा रहबो सेटा से अकाउंट को एटा फेच करिवो ओके यार हमरो कोन अछि KBS अकाउंट ता केबे भी आमे बैक एंड रे आर कोनोसी फिक्स्ड GL अकाउंट एठी मेंशन करूना ये सबले फेच करिवो गोटे अलग अकाउंट को जहा अगेंस्ट रे ये पुनी नेक्स्ट स्टेप रे आसीबार अछि तारी अकाउंट को से नै जिवो एटा कहा अकाउंट रे आसीबार थिला पेबल अकाउंट रे आसीबार थिला ओके तो सेति पई पेबल अकाउंट रो जो GL अकाउंट सेटा ही से फेच करिवो KBS अकाउंट ओके सो एटा हमें डिटेल रे भी डिस्कशन करिवा हमरा ऑटोमेटिक अकाउंट डिटरमिनेशन टाइम रे राइट एबे टिके टिके बुझा पडुछ कि बुझा पडुनी अकाउंट रिलेटेड एक्टिविटीज ତ ସେଇ ଯୋଉ ମଡିଫାଏ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇଟା କଣ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ हां ए जोटा अकाउंट मॉडिफायर जनरल मॉडिफायर कथा कहउछ तो हाँ 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 हां सो कोन हुए कि जीबीबी इज ए ऑफसेटिंग एंट्री ओके ऑफसेटिंग एंट्री देखो जीबीबी व्हेयर इज जीबीबी इट इज ऑफसेटिंग एंट्री फॉर इन्वेंटरी पोस्टिंग ओके जेको जहां भी करो तमरो जीबीबी आसीबो या फिर WRX आसुची केतबळ सो जीबीबी कोन ना ऑफसेटिंग एंट्री जेतबळ आसुची सो ऑफसेटिंग एंट्री को हमें फर्दर जदी डिवाइड करबा को चाहिबा ओके एटा बहुत सारा जिंसो पई हमें जीबीबी यूज करूचे सेति पई आपको ऑफसेटिंग एंट्री को जाय सो सपोज हमें एटा को गुड्स इश्यू कला बेले भी यूज करूचे या फिर डिफरेंट डिफरेंट गुड्स इश्यू करूचे जेमिति हमें एठी कोन कले पाइपलाइन रो इश्यू को गुड्स इश्यू करचंते ना सिमिलरली हमें जेतबळे अलगा गोटे कंज्यूम करबा जेमिति कि हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस रे भी हमें कोन करू रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करबा एंड से माने फर्दर हमको फिनिश्ड गुड देबे तो से केस रे ए जगह रे VBO आसी जीवो सो हमें पाइपलाइन प्रोसेस एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस दुईटा के भीतर डिफरेंशिएट केमती करबा जदी ओनली जीबीबी थिबो जो कॉमन हे जाउछि ना सो फर्दर डिवाइड करबा पई हमें आउ गोटे मॉडिफायर आनले दैट इज योर जनरल मॉडिफायर ओके एंड एठी ସେଇଟା देखो VBR ସେଇ ଟେबल ରେ ଅଛି କି नहीं VBR टा कहा भीतर रहइबो एमे VBR टा को फर्दर डिवाइड करूचे कहा पई जीबीबी पई सो एटा कहा भीतर रहइबा दरकार जीबीबी भीतर रहइबो हाँ 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 हां कि नहीं सो हाँ जीबीबी VBR कॉम्बिनेशन रे हमें तो बनेले ना जीबीबी अंडर गला परे देखो VBR एठी बनेले 9190 गॉट हाँ इट सिमिलरली देखो एठी कोन अछि KON PIP एटा कोन कंसाइनमेंट बेले भी KON आस्तिला देखो कंसाइनमेंट बेले भी हमरो KON आस्तिला KON देखा जाउछ तो एटा हाँ हाँ देखा
KON आस्तिला consignment बेले but consignment बेले कौन से जगह रहू ताकू general modifier दरकार नहीं but pipeline consignment भीतर हमें differentiate केमती करिवा so KON PIP सेथि पई हमको एठी कोन करिवा बाबा जनरल मॉडिफायर यूज करबा को पड़े KON PIP तो फर्दर क्लासिफाई दिस ओके बुझी परला हाँ। हम एठी करथले सेटलमेंट हे सारछि ओके ऑलरेडी सेटलमेंट हे सारछि माने हमें एतकी अमाउंट तको पेमेंट करूछे सो टेक दिस स्क्रीनशॉट अकाउंटिंग एंट्रीज ड्यूरिंग सेटलमेंट डन एंड नेक्स्ट होची कोन कि हमें एतकी तको पेमेंट करिवार अछि से तो हमको इनवॉइस देनी है ना नॉर्मल प्रोसेस रे सप्लायर इनवॉइस प्रोवाइड करता है बट पाइपलाइन प्रोसेस हमें ताकू दवा इनवॉइस ओके नंबर 5 बट एठी हमर कोन अछि को सेटलमेंट न करिया तार कोन प्रॉब्लम हबो सेटलमेंट न कले तमे तो पेमेंट केमती करिवो जोटा इनवॉइसिंग हमें जतो बड़ा करू ओके नॉर्मल Yeah. केस रे कहूची जतो बड़ा इनवॉइस हम पाखु आसिला तो हमें कोन करिवा ताकू सिस्टम रे एंट्री करिवा एंट्री कोला परे ता अगेंस्ट रे पेमेंट करिवा राइट तो ये जोटा से माने ए जगह रे पाइपलाइन रे जेतु इनवॉइस हमको प्रोवाइड करू ना सो आमो एंड रो हमें ताकू सेटलमेंट करिवा राइट आमो एंड रो हमें इनवॉइस रेज करिवा ओके इनवॉइस रेज कला पर पेमेंट करिवो ना जदि तमे सिस्टम रे दैट सिस्टम हमको कोन पे दिया है सिस्टम मींस ईआरपी सिस्टम एसएपी हमें कोन पे यूज करछे सब जिंस को ट्रैक करिवा पई ओके हमें जदि इनवॉइस क्रिएट न करिवा पेमेंट करिवा तो हमें से जगह कोन ट्रैक करि परिबानी कि पेमेंट काहू इनवॉइस अगेंस्ट रो हैला बुझि परछो तो सेति पे हमको सेटलमेंट भी करिवार अछि सो नाउ हमको कोन करे आउटपुट करिवा सो आउटपुट रो गोटे एठी देखो प्री रिक्विजिट अछि तमे पाइपलाइन क्रिएट कलो पीआईपी मेटल टाइप रे इन्फो रिकॉर्ड बनेलो बट आउटपुट करिया पे गोटे प्री रिक्विजिट अछि क्रिएट कंडीशन रिकॉर्ड फॉर मैसेज आउटपुट सो फर्स्ट हम एटा करिवा स्टेप 4 रे देन हमें आउटपुट करिवा MR11 रे ओके स्टेप नंबर 5 एटा को तमे फास्ट भी करि परिबो लास्ट भी करि परिबो नो इश्यू ओके सो थ्रू टी कोड MR11 so put here /n mr m1 enter एटी आउटपुट टाइप कोन नबो KONS हमें पुट करिबा KONS for both consignment and pipeline process by output type KONS सो ए सब जिंस हमें आउटपुट डिटरमिनेशन प्रोसेस रे भी भल से जगह रे एक्सक्लूसिवली सेटा हमें डिस्कशन करिवा ता पई भी अलग क्लासेस अछि आउटपुट डिटरमिनेशन इट कम्स अंडर आउटपुट डिटरमिनेशन सो नाउ पुट KONS and enter and key combination हमें एटा कंपनी कोड कॉम्बिनेशन ओनली कंपनी कोड नै जाओ कंपनी कोड वेंडर नै गले कोन हो कि इट इज स्पेसिफिक टू वेंडर हे गला आ गोटे वेंडर पई हेले पुणी ता पई आउथरे कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करिया पड़ो ओके सो हमें कंपनी कोड अगेंस्ट यदि कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कर दउ छे सो ओवरऑल सब वेंडर पई ना पई एटा एप्लीकेबल हे जिवो सो हम तो फर्दर से जगह रे रिपीटेटिव ए काम गुडा करिया पड़िबोनी आउटपुट कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन ओके नाउ सो आर भी गोटे स्क्रीनशॉट नै जाउ छे सो दैट तुमको इजी होबो ओके नाउ ओके एटी कोन देखियो एटा होची कोन कंपनी कोड एटी कंपनी कोड पुट कलो RBS1 नंबर कंपनी कोड रे हम यूज कर छे एंड फंक्शन एटी हमें नबा VN फॉर सप्लायर एटी भी ड्रॉप डाउन जे तुम चेक करिवो will come as your VN
VN, supplier or vendor. Okay, and this is your medium. को medium रे तमे तांकू आउटपुट करबा को चाहू छ या फिर शेयर करबा को चाहू छ थ्रू प्रिंट आउट हमें तांको प्रिंट आउट बाहर करके प्रोवाइड करबा डेट और टाइम केते बेले करबा को चाहू छ इमीडिएट करबा को चाहू छ या फिर with own application की अलग गोटे ट्रांजैक्शन टी कोड रे ताको प्रिंट आउट करबा को चाहू छ सो टिल नाउ हमें नै जेबा सेंड विथ एप्लीकेशन ओन ट्रांजैक्शन इन रियल टाइम कोन होय सेम इमीडिएटली जेतो हमें सेटलमेंट करू ना सेटलमेंट परे परे एटा ऑलरेडी हो जाए ओके तो सेति पई कंडीशन रिकॉर्ड सबल पई एट ए टाइम सेटा को कंप्लीट करंती का सहित जेतो मेटेरियल टाइप कलो इन्फो रिकॉर्ड कलो देन तापरे एटा कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कर दबा कथा जदी तमे सेटलमेंट करछो सेंड इमीडिएटली जदी परे करूछो देन विथ ओन ट्रांजैक्शन देन सेतोल न करी परे कले भी कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कले भी चलियो तो एक दिस इयर्स विथ ओन ट्रांजैक्शंस मींस हमें गोटे डिफरेंट टी कोड रे हमें ताको शेयर करिवा एंड लैंग्वेज EL एंटर the condition record entered already exists that means ये कहछि कि already exist करछ जदी already exist करछ go to हमें डिस्प्ले को जीवा /n mr m3 enter key combination company code and put your company code here mrm3 रे कोन डिस्प्ले mrm1 create mrm2 change mrm3 डिस्प्ले सो एग्जीक्यूट करो तो कुछ देखो सेम जिंस अछि rbs1 कंपनी कोड पई फंक्शन bn and print out date or time with one transaction and language pay already mention अछि so select करो and go to communication so हमें तो प्रिंट आउट करबा प्रिंट आउट पे आउटपुट डिवाइस तो गोटे रहबा दरकार ना हम प्रिंटर सेठी असाइन होथिबा दरकार जनरली तम ऑफिसेस माने करे कोन प्रिंट कला बेले प्रिंटर एठी असाइन थाए ना सो एठी हमें लॉजिकल हमें एठी आउटपुट पई हमें लॉजिकल एठी गोटे यूज करबा दैट इज LP01 ओके हमें लॉजिकल यूनिट हमें करूचे ऑलरेडी हमर पाखर कोन सिस्टम प्रिंटर नहीं तो सेति हमें LP01 यूज करबा ओके सो दिस इज योर condition record and next select करिवो go to communication एठी select करो LP01 डन सो हम कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कर देले एबे हमें कोन करबा जोटा हमें सेटलमेंट करछे सप्लायर को प्रोवाइड करबा ना विथ वन ट्रांजैक्शन डिफरेंट टी कोड रे कोन से टी कोड दैट इज MR91 step number 6 this is step number 5 highlight now step number 6 that is message output हमें ताको प्रोवाइड करबा या फिर हमर एटा मेसेज हमर एथरे ही थिला कि हमें कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करले एंड हमें सेटी स्टेप नंबर not 6 it is in same process message output करे MRM1 so MRM1 put करो go to MR oh sorry MR91 MR91 ना आउटपुट कौन मेंशन करछि मु दिस इज अ पाइपलाइन मेसेज आउटपुट MR91 हमें MRM1 रे कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कले ओके ताको आउटपुट केमती करबा थ्रू मेसेज आउटपुट MR91 डन सो गो टू MR91 सो एटी पुट करो MR91 एंटर सो एटी कोन मागुची कि आउटपुट टाइप कोन हमें KONS रे बनैथिले कंडीशन रिकॉर्ड K1 नहीं गले शॉर्ट ऑर्डर एंड प्रोसेसिंग ऑर्डर इट इज डिफॉल्ट एट आसी जो 1011 एंड डॉक्यूमेंट नंबर को डॉक्यूमेंट सेटलमेंट जोडा हितला ना हमरो
एटा हमर सेटलमेंट हेतिला सेटलमेंट रा डॉक्यूमेंट नंबर एटा सो सेटा हमको पुट करबा पड़िबो एठी डॉक्यूमेंट नंबर एंड को फिजिकल ईयर एंड कंपनी कोड एतके हमको पुट करबार अछि राइट देन गो टू एग्जीक्यूट कला परे देखो सेथिरे आसी गला एटा कि ये होची वेंडर आरके इंडस्ट्रीज ओके हमें आउटपुट करछे केओएनएस रे राइट सो एटा सिलेक्ट करो एंड गो टू प्रीव्यू प्रिंट प्रीव्यू देखो प्रिंट प्रीव्यू रे एमती आसीबो कि पाइपलाइन हमें सेटलमेंट करियो को जाउछे पाइपलाइन सेटलमेंट दिस इज आवर डॉक्यूमेंट नंबर दिस इज डेट करेंसी आईएनआर ओके सो हमें यूज करछे 100 लीटर रे टोटल अमाउंट होची 9000 टैक्स होची 5% ता ऊपर 9000 ऊपर दैट इज 450 सो टोटल इज 945 सो हमें सप्लायर को प्रोवाइड करूचे कि हमें पाइपलाइन सेटलमेंट करूचे दिस इज योर इनवॉइस ओके सेटलमेंट हमें एटा को ओनली एटा को हमें कोन करे प्रिंट आउट करबा एंड ताको सप्लायर को सेंड करबा विथ ऑल सिग्नेचर्स बुझी परला Yes. ओके एटा को कहै छै आउटपुट ओके एथि पई हमें आउटपुट रिकॉर्ड मेंटेन करथिले सो एटा हमें कोन करछे जस्ट प्रिंट प्रीव्यू करछे फर्स्ट गो बैक एटा को सिलेक्ट कला परे देखो एटी एग्जीक्यूट करो एग्जीक्यूट कला परे कोन आसला एटी ऑल सेटल्ड आउटपुट सक्सेसफुली प्रोसेस्ड ओके सो आउटपुट हे गला सक्सेस सेटल डिस्प्ले को गले भी सेम जिंस ही आसीबो ओके एटी हमको ऑलरेडी साइन करी हम सब ऑथराइज को साइन करी ताको पठाओ देन ताको पेमेंट भी कर दियो ओके नेक्स्ट स्टेप इज योर पेमेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ओके बुझा पड़ला पाइपलाइन प्रोसेस ए टू जेड बुझा पड़ला गोटे किछि क्वेश्चन doubt सर अछि? हम इनवॉइस दउचंदी सेटलमेंट करिकी यूज करिकी वेंडर कहीं सेटा सप्लायर कहीं सेटा इनवॉइस कर परियोनी हम कहीं अच्छा दे परियोनी ओके सो तमे जदि एमती किछि करिवो कि सपोज तम घरे कोन लागिछि तमे हाउस होल्ड रे कोन यूज करछो इलेक्ट्रिसिटी यूज करछो इट इज अ टाइप ऑफ पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट तो से जगह रे कोन आसुछि कि सप्लायर आसुछि कि तमरो जे भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रे माने थिबो टीपीसीओडीएल कि जो माने नइचंती से माने कोन करिवे तम घर को आसुचंती बिल चेक करचंती से माने ऑलरेडी सेट आसी कि ही तुमको बिल प्रोवाइड करचंती हां कि नहीं आया बट पाइपलाइन प्रोसेस रे कोन हुए बट इन इंडस्ट्री केसेस रे कोन हुए कि से जगह रे ऑलरेडी मीटर लागिछि ओनली हमको मीटर रीड करिवार अछि एंड से माने को पठेवार अछि सो एटा नु कि बैक एंड रे सप्लायर सब किछि माने तम ऊपर ही विश्वास करूछि ता एंड रे भी तो लगै थिबो ना मीटर ता end हाँ सीए भी तो किसी गोटे पठेबो अन्य मानकु से दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस राइट हाँ सीए भी दैट ट्रैक इज करथो दैट हाँ से माने भी ट्रैक करूथिबे कि हाँ कई सप्लायर को मु दउची हमर क्लाइंट अछि ताको प्रोवाइड करछि से भी बैक एंड रे करूथिबो नो इशू बट एसएपी रो इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस कि हमें जेहेतु एटा पाइपलाइन प्रोसेस ऑलरेडी कनेक्टेड टू आवर प्रीमाइसेस सो सेठी भी हमर डिवाइसेस यूज होउची सो हमें देखिबो वीकली हमें एती कले सेतिके रो हमें इनवॉइस सेटलमेंट करिके ताको पठे देले सो इट इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट सबोळे पई थाए ओके सपोज सी कहबो कि नाही आमे पठेबू हमर सेठी सब किछि टीम रहिबे सब करिवे नो इशू सेटा भी मैप करि जे जो एसएपी रे सहित बट थिंक इज दैट गोटे स्टैंडर्ड जिंस थाए गोटे कस्टमाइज जिंस थाए ओके दिस इज द स्टैंडर्ड वे कि पाइपलाइन प्रोसेस रे हमें सेटलमेंट करंती किए कि जो कंपनी एसएपी इंस्टॉल करथि गॉट इट ताले सेटलमेंट और इनवॉइस बोथ माने फॉर्म दबो माने प्लान नहीं करके नहीं देखो दबो सेटलमेंट इज ए माने जोटा कि देखिबो इनवॉइसिंग जो करछो ना दैट इज रिलेटेड टू सेही पार्ट को ही रिलेट करूची कि हमें इनवॉइसिंग ही करूचे बट से जगह कोन हमें इनवॉइस तमे जनरली कोन हुए जेतो बळे फ्लिपकार्ट रो ऑर्डर करछो से फिजिकली गोटे इनवॉइस मिलुचे ना हां हां सिमिलरली कंपनी मान कर भी सेमाने भी सेती फिजिकली दियंती सेटा को तमे एंट्री करो जोटा कि कुहो इनवॉइस रिसीप्ट आईआर ओके एंड ए जगह रे ताको कहउछो सेटलमेंट
कोन पे टिके डिफरेंट रखुचे कि इट्स इज ए पाइपलाइन प्रोसेस सेति पे हमें एथरे सेटलमेंट कहूचे ओके नथिंग डिफरेंट मोर और लेस सेम ओके ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ମାନେ ଏଟା ସପ୍ଲାଏ କିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନି ଏଟା ସବୁ ନା एटा जे माने यूजर ही एटा करूची ओके ହଁ